Hello students, hope all of you are in the best of health and spirits. Hello students. All right, so I am live. Okay, so we are going to do verbal reasoning right now. And now this verbal reasoning, of course, will come in handy for the CMATs as well. Now, before we proceed with verbal reasoning, I want to tell you that we would also be doing some vocabulary. All right. And another thing that today I'll talk earlier about the subscription plans because we have special discounts going on for you guys. So as you already are aware that we have our plus subscriptions for you and our iconic subscriptions for you, and generally you get 10% off on using the code Sharmaji. Today and tomorrow you are going to get 22% off if you go for any of the subscriptions. So in plus you get live classes, you get weekly test, structured course, unlimited access, study material. And in iconic you get everything that comes with plus. Along with that there's going to be personal guidance, personal mentorship, study planner, like I said, study material, experts guidance, just analysis. The difference is for any of the plans that you subscribe to, you're going to avail 22% off. You can easily avail 22% off on using the code Sharmaji. So these are the base prices: 16,400, 18 for 18 months is 28,550, and 24 months is 32,800. Use the code, get 22% off on all these prices. And in iconic subscriptions, 6, 12, and 24 months, the price right now is 25,800, 39,500, 59,999. But use the code Sharmaji, get 22% off on any of the plans. All right, so that's how it's going to be for today and tomorrow. All right, now चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं. अब हम रीजनिंग पे आ जाते हैं बिकॉज अभी आप जो भी एग्जाम बचा है, जो भी एग्जाम आपको देना है, you have to be well versed in reasoning. Hello Bipul, hope you're doing well. Wish you a very happy new year. चलिए, so this time what are we supposed to do? We have to look for an option that logically completes your argument. So we have to make sure कि जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं, it has to be the conclusion of the argument and it also has to be logical. All right, it can't just be random. There has to be logic in it. ठीक है, तो पैराग्राफ पढ़ के देखिए. A person with low self-esteem will be treated disrespectfully. That means the person already has low self-esteem. खुद पे भरोसा नहीं है, right? Self-respect बहुत नहीं है. Will be treated disrespectfully more number of times than a person with a high self-esteem. Moreover, a recent experiment found that when people with low self-esteem and those with high self-esteem are both confronted with same treatment by others, मतलब same treatment अगर उनको मिलता है by others, then what happens? People with low self-esteem are much more likely to feel that they have been treated disrespectfully. बड़ा ही अच्छा लॉजिक है, बहुत ही सिंपली आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं. पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि एक इंसान जिसका लो सेल्फ एस्टीम है इज लाइकली टू बी ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन अ पर्सन विद अ हाई सेल्फ एस्टीम. बट उसके आगे का एडेड इंफॉर्मेशन देखिए. मोर ओवर, एक रिसेंट एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि if the same kind of treatment is meted out to a person with low self-esteem and a person with high self-esteem, same kind of treatment, उसमें चांसेस है कि लो सेल्फ एस्टीम वाले उसको समझ लें कि उनको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा है, वेयर एज हाई सेल्फ एस्टीम वाले ऐसा नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे इफ दे ऑलरेडी हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम. यानी कि आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं थ्रू दिस? thus. So thus, after this you have to fill in the blank from using one of the given options. So what do you guys think? What should it be? बहुत सिंपल लॉजिक है. It's very important that you also understand what the answer option is saying. तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ. पैरा कह रहा है, पहले तो एक स्टेटमेंट दिया है कि अ पर्सन विद लो सेल्फ एस्टीम विल बी ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली मोर ऑफन. ठीक है, बट आगे कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि रीसेंट एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि एक्चुअली अगर सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है टू
a person with low self esteem and to a person with high self esteem, same kind of treatment. तो चांस ये है ना कि जिनका लो सेल्फ एस्टीम है, दे आर लाइकली टू फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली, बट हाई सेल्फ एस्टीम वाले ऐसा फील नहीं करेंगे. इसका मतलब ये होता है कि सेम ट्रीटमेंट में अगर मेरा लो सेल्फ एस्टीम है तो मुझे लगता है लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मे बी इट्स नॉट दैट दे आर ट्रीटिंग मी डिसरिस्पेक्टफुली, इट्स जस्ट दैट माई परसेप्शन इज सो. माई परसेप्शन मतलब मेरा नजरिया मुझे लगता है, राइट मैं सोचती हूँ कि मुझे डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा है, और हाई सेल्फ एस्टीम वाले ऐसा नहीं सोचते हैं विद द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. दैट वुड बी योर राइट ऑप्शन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑप्शंस आर सेइंग. तो सारे ऑप्शंस देखिए. ए देखिए, पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम आर यूजुअली राइट व्हेन दे थिंक दे हैव बीन ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली. हमको क्या पता, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सेम है. हाई सेल्फ एस्टीम को नहीं लग रहा है कि डिसरिस्पेक्ट है, लो सेल्फ एस्टीम को लग रहा है. सो हाउ डू वी नो वेदर व्हाट दे आर थिंकिंग इज राइट और इज इट रॉन्ग. तो ये आपका हो रहा है आउट ऑफ स्कोप. फर्स्ट ऑप्शन इज आउट ऑफ स्कोप, क्योंकि हमको नहीं पता वेदर दे आर, एंड देयर इज नो हिंट इन द पैसेज. बी देखते हैं. बीइंग ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली टेंड्स टू कॉज अ पर्सन टू डेवलप लो सेल्फ एस्टीम. ये पैसेज में कॉज एंड इफेक्ट दिया है कि लो सेल्फ एस्टीम है तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट डिसरिस्पेक्टफुल लगता है. बी उसका उल्टा कर दिया है कि एक्चुअली लोग आपको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं इसलिए आपको लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है. तो पैसेज में जो कॉज एंड इफेक्ट दिया है बी ऑप्शन में, उसको फ्लिप कर दिया है कॉज एंड इफेक्ट को. हाउ डू वी नो, लाइक इट्स लाइक सेइंग भूख लगती है तो खाना खाते हैं. कॉज भूख, इफेक्ट खाना. उल्टा कर दो, खाना खाते हैं तो भूख लगती है. नो सेंस, राइट? फ्लिपिंग द कॉज एंड द इफेक्ट, सो इट कांट बी बी. सी ऑप्शन समझिए कह क्या रहा है. इफ एन इंडिविजुअल हैज बीन ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली, यानी कि अगर एक इंसान को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है, इट इज प्रॉबेबली वो ऐसा है इसलिए है क्योंकि द इंडिविजुअल वॉज परसीव टू हैव लो सेल्फ एस्टीम. इंडिविजुअल वॉज परसीव टू हैव लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है ये नहीं कि लो सेल्फ एस्टीम वाले का नजरिया क्या है, ये नहीं कह रहा है. सी कह रहा है कि अगर किसी को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि लोगों का मानना है कि उस इंसान में लो सेल्फ एस्टीम है. क्योंकि देखो क्या लिखा है, इट इज बिकॉज द इंडिविजुअल, पैसिव वॉइस में लिखा है, द इंडिविजुअल वॉज परसीव्ड टू हैव लो सेल्फ एस्टीम. इंडिविजुअल इज परसीविंग नहीं लिखा है, इंडिविजुअल वॉज परसीव्ड, पैसिव वॉइस, यानी कि इंडिविजुअल उस माना जाता है कि उस इंडिविजुअल का लो सेल्फ एस्टीम है. सो सी का मतलब आ रहा है किसी इंसान को डिसरिस्पेक्टफुली हम इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि उसका लो सेल्फ एस्टीम है, तो हमको लगता है अरे लो सेल्फ एस्टीम है उसका, चलो डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करो. कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, right? It's something else. It's just that a person has low self-esteem. They feel that they are being treated disrespectfully more often. They just feel that. It's not that they're really treated disrespectfully. They perceive, not that they are perceived, not that the individual was perceived. The individual perceives any kind of treatment to be disrespectful treatment. D. People with low self-esteem more frequently think that they are being treated disrespectfully than do people with high self-esteem. So D makes sense. D is what I have been saying throughout in some different words, but D is what we have been discussing. और E, a person with low self-esteem will be more inclined to treat others. ये कहाँ से आ गया, हमको क्या पता वो दूसरों को कैसे ट्रीट करेगा, हमको नहीं पता. All right, so the correct answer is D, delta. If you have a doubt, you can write it here, or later on in the comment section as well, you can write your doubt. All right. तो एक तो ऑफ कोर्स आई मीन ये वर्बल रीजनिंग इंग्लिश में इसीलिए आता है क्योंकि ये एक तरह से पजल होता है. इट्स लाइक अ रिडल, इट्स लाइक अ पजल, इट्स लाइक यू हैव टू अप्लाई लॉजिक एंड कम टू द आंसर, बट एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट ईच एंड एवरी सेंटेंस इज सेइंग. इफ यू सी इन द प्रीवियस क्वेश्चन, परसीव, मैं भी परसीव वर्ड यूज कर रही थी, नजरिया वर्ड यूज कर रही थी, बट व्हाट आई परसीव is different from what I am being perceived as, right? Active and passive, है ना? तो वो meaning change हो जाता है. So grammar also becomes important in understanding everything. चलिए, let's try out the next one. So I see Rajat got the right answer. Now the next one. Which of the following most logically completes the passage? I'll read out the passage loudly, then I'll give you 2 minutes to go through the options, understand them, and logically answer. Okay? Let's see. Garnet and Renko each provide healthcare for their employees. All right. ठीक है, healthcare देते हैं अपने employees के लिए.
यानी Garnet and Renko would be some companies, I'm guessing. Garnet pays for both testing of its employees' cholesterol levels and treatment of high cholesterol. All right, दोनों के लिए वो पे करते हैं कि कोई अगर अगर मैं गार्नेट की एम्प्लॉय हूँ तो मैं अगर टेस्टिंग भी कराने जाऊँ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का तो भी द कंपनी विल पे फॉर इट और ट्रीटमेंट के लिए तो करेंगे ही. दिस पॉलिसी सेव्स गार्नेट मनी. ऑल राइट, हमको तो लग रहा था कि पैसा खर्च हो रहा है कंपनी का, पर ऑथर कह रहा है कि इस पॉलिसी से गार्नेट का पैसा बचता है. कैसे बचता है? बिकॉज हाई कोलेस्ट्रॉल लेफ्ट अनट्रीटेड फॉर मेनी ईयर्स लीड्स टू कंडीशंस दैट रिक्वायर वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट. समझ आया? However, Renko does not लिखा है, I'm sorry about that, does not have the same financial incentive to adopt such a policy because समझ आया फायदा क्या है? Garnet is paying for their employees testing as well. इस पॉलिसी से गार्नेट का पैसे कैसे सेव होता है? क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल इफ इट्स नॉट ट्रीटेड फॉर मेनी इयर्स देन आगे ऐसी बीमारियां होती हैं विच बिकम वेरी एक्सपेंसिव. But हालांकि Renko does not have the same financial incentive to adopt such a policy because क्यों? Okay, I see Rajat has posted an answer. I'll wait a bit for the rest of you as well. Okay, Umesh got E, Sanchit got E. गार्नेट ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि फायदा उसको किस तरह से होता है टेस्टिंग में. बिकॉज व्हेन एम्प्लॉइज लेटर ऑन लेटर ऑन आफ्टर फ्यू इयर्स और व्हाटएवर अगर किसी का अनटेस्टेड अनट्रीटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है तो बड़ी बीमारियां होती हैं विच गेट्स इवन मोर एक्सपेंसिव. बट रेंको ऐसा नहीं कर रहा है तो दैट हैज टू बी जस्टिफाइड. यू गाइस आर सेइंग ई, सो फर्स्ट वी विल एनालाइज ई. रेंको ऐसा नहीं कर रहा है, does not have the same financial incentive to adopt such a policy. उसको फायदा नहीं है ये पॉलिसी अडॉप्ट करके क्योंकि यानी कि रेंको के साथ एम्प्लॉयज उतने लंबे टाइम के लिए रहते नहीं होंगे जहां पे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स की वजह से ऐसी बीमारियां हों which untreated for a longer period of time leads to expensive treatment. He is saying that the average length of time an employee stays with Renko is less than it is with Garnet. तो yes, it does make sense कि बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे नहीं तो ये फाइनेंशियल फायदा नहीं है रेंको को, राइट? E is making sense, but we'll check the other options if we find something better. D देखते हैं. Renko's employees are unlikely to have higher cholesterol levels at Garnet's. Okay, that's a very generalized statement. हो भी सकता है, बट ये फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर रहा है. फाइनेंशियल इंसेंटिव ये था, फाइनेंशियल फायदा ये था कंपनी को कि टेस्ट कराएंगे तो लॉन्ग टर्म में जो बीमारियां हो सकती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होंगी उससे बच जाएंगे. तो डी डजंट रिलेट टू दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव वेयर एज ई डज कि लंबे टाइम के लिए एम्प्लॉय स्टे ही नहीं करेगा तो इसलिए रेंको के पास वो फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है. सी कह रहे हैं रेंको हैज मोर एम्प्लॉयज देन गार्नेट हैज, डजंट रिलेट टू फाइनेंशियल. व्हाट इफ द एम्प्लॉयज स्टे फॉर मच longer than they do with Garnet and they develop such ailments, तब तो बड़ा expensive हो जाएगा. B, mass media features stories encouraging people to maintain diets out of scope. A, early treatment of high cholesterol does not entirely, हर बार does not क्यों लिखा है, eliminate the possibility of stroke later in life. This is extreme. Does not, it's not even saying does not eliminate, it's saying does not entirely eliminate. मतलब कि eliminate करता है पर पूरी तरह से नहीं. There might be a 1% chance of a stroke. तो ये तो exceptions तो हर जगह होते हैं. So you guys are right. E, Rajat, Umesh, Sanchit, Sanjeev, yes, E would be the best option out of these. Would I say it's like very good? बहुत अच्छा तो नहीं है क्योंकि एवरेज लेंथ ऑफ टाइम भी बहुत वेग करके दिया है. क्या लेंथ है, कितना डिफरेंस है, वो नहीं दिया है. थोड़ा नंबर्स दिए रहते या एग्जैक्टली किस तरह का लेंथ ऑफ टाइम में डिफरेंस है वैसा दिया रहता तो वुड हैव बीन बेटर. तो ई इज द करेक्ट ऑप्शन. ये है अंधों में काना राजा, लीस्ट बैड आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, इसलिए बेस्ट हो गया. ये भी देखना, कंपैरेटिवली इट्स द बेस्ट relatively. Okay, moving on to the next one. Question number 3. Which of the following, if true, most logically completes the politician's argument?
तो देखते हैं पॉलिटिशियन क्या बोल रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिशियन. Although the amount of United States goods shipped to Mexico doubled in the year after tariffs on trade between the two countries were reduced, okay, it does not follow that the reduction in tariffs caused the sales of United States goods to companies and consumers in Mexico to double. Kyunki, because. समझ आया? Although है, so there is a contradiction. What is the contradiction? Oh, that's great, Shubham. Wonderful. अब आगे के एग्जाम्स की तैयारी. Were you able to attempt all the questions? Okay. Meanwhile, and Rajat has already given an answer. Although पे ध्यान दीजिएगा, the amount of United States goods shipped to Mexico doubled in the year after tariffs on trade were reduced. Right? तो goods जो US ship करता है मेक्सिको को वो डबल हुआ. और कब डबल हुआ? आफ्टर द ट्रेड टैरिफ्स जो ट्रेडिंग में जो चार्जेस लगते हैं टैक्सेस लगते हैं वो रिड्यूस हो गया जब तो गुड्स शिप्ड वो डबल्ड. पर हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑथर बोल रहा है दोनों साथ में तो हुआ कि जब टैरिफ्स कम हुए तो गुड्स शिप डबल हुए पर it's not really because of the reduction in tariffs that the sales of goods that the shipping of goods and the sales doubled. It's not because of the reduction. Hmm. It's not that the sales of United States goods to companies and consumers doubled because of reduction in tariff. तो ऐसा क्यों इसको जस्टिफाई करना है? मतलब शिपिंग डबल हुआ बेसिकली. दीज आर द कीवर्ड्स. शिपिंग डबल हुआ बट सेल्स डबल नहीं हुआ. देखिए सेल्स डबल नहीं हुआ. ऑलराइट. So I see we have got B by Rajat. Ayush is saying D, and then Sanjit is saying B again. हमको जस्टिफाई क्या करना है कि टैरिफ्स रिड्यूस हुए उसी समय क्या डबल हुआ? शिपिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम यूएस टू मेक्सिको डबल हुआ. पर ऐसा नहीं हुआ कि रिडक्शन इन टैरिफ्स की वजह से सेल्स ऑफ द सेम गुड्स डबल्ड फ्रॉम यूएस टू मेक्सिको. शिपिंग मतलब यूएस जो शिप कर रहा था गुड्स जो भेज रहा था मेक्सिको को वो डबल हुआ बट सेल्स डबल नहीं हुआ. टू whom? टू द कंपनीज एंड कंज्यूमर्स इन मेक्सिको. क्यों? उसको जस्टिफाई करना. दैट हैज टू बी जस्टिफाइड फ्रॉम द ऑप्शंस.
Why aren't the rest of you answering? Alright, let's discuss it now. तो हमको क्या justify करना था? That same thing I have repeated I think 3 to 4 times कि shipping double हुआ, goods जा रहा है US से Mexico, tariffs जब कम हुए, trade tariffs basically, तो जो goods ship कर रहा था US Mexico तक, ship कर रहा था केवल वो double हुआ, पर इसका रिजल्ट ये नहीं हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स वही गुड्स मेक्सिको में बिक रहे हों, मेक्सिको की कंपनीज को या कंज्यूमर्स को बिक रहे हो, वो डबल नहीं हुआ। क्योंकि देखते हैं ए many of the United States companies that produce goods that year had competitors based in Mexico that had long produced the same kinds of goods. All right. तो you're saying कि shipping हुआ, but इसका रिजल्ट ये नहीं था कि रिडक्शन इन टैरिफ्स कॉज द सेल्स टू डबल। देखो, थिंक अबाउट इट कि अगर ए है कि बहुत कॉम्पिटिटर्स थे मेक्सिको में और सेम लॉन्ग टाइम के लिए, यहाँ पे कैच देख लिए, दैट हैड लॉन्ग प्रोड्यूस द सेम काइंड्स ऑफ गुड्स, देन व्हाई डिड, यानी कि यूएस के गुड्स वहां बिक नहीं रहे थे, देन व्हाई डिड दे कीप ऑन शिपिंग इट, राइट? मतलब शुरुआत में नहीं बिके, ऐसा नहीं है ना कि जब जो ये लिखा है कि गुड शिप डबल्ड, ऐसा नहीं है कि एक बार में शिपिंग होता है, नहीं, वो तो थ्रू आउट द ईयर शिपिंग हुआ है। तो अगर सेल्स हो ही नहीं रहा था, थिंक अबाउट इट, मे बी दैट्स व्हाट योर कंफ्यूजन इज। अगर सेल्स हो ही नहीं रहा था, देन व्हाई डिड दे कंटिन्यू शिपिंग? डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर थिंकिंग कि अरे वो जो शिपिंग हुआ वो एक बार में पहुंचा दिया मेक्सिको, ऐसा नहीं है, पूरे साल की बात हुई है, इन द ईयर की। तो इफ ए हैड बीन द केस, देन व्हाई वुड दे कंटिन्यू शिपिंग? नो, अगर सेल्स उनका हो ही नहीं रहा है, तब तो वहां पे बहुत माल ऑलरेडी पड़ा होगा मेक्सिको में यूएस का। व्हाई वुड दे कंटिन्यू शिपिंग? सो इट वुड नॉट बी ए, because they continued shipping till it doubled. So it can't be A. B. Most of the increase in goods shipped by US companies to Mexico was in parts shipped to the company's newly relocated subsidiaries for assembly and subsequent shipment back to the US. Subsequent is उसके बाद. तो B makes some sense कि जो शिपिंग हो रही थी यूएस के गुड्स की मेक्सिको तक, वो एक्चुअली मेक्सिको में बेचने के लिए हो ही नहीं रही थी, इसलिए साल भर होता रहा शिपिंग। वो क्यों वहां पे शिप कर रहे थे उसको एक्सप्लेन किया। दे वर शिपिंग देयर गुड्स टू मेक्सिको बिकॉज इट वाज टू द यूएस के कंपनीज का सब्सिडियरीज ओनली, एंड द पर्पस वाज टू शिप देयर फॉर असेंबली, बस असेंबली करने के लिए, उन गुड्स को असेंबल करने के लिए, एंड देन दे वर शिप्ड बैक टू द यूएस, एंड मे बी द गुड्स वर सपोज टू बी सोल्ड इन द यूएस ओनली। दैट इज वाई सेल्स इन मेक्सिको ऑफ द सेम गुड्स डिड नॉट डबल। बी मेक सेंस कि शिपिंग डबल क्यों हुआ और सेल्स डबल क्यों नहीं हुआ। इन सेल्स कहाँ पे डबल नहीं हुआ? सेम गुड्स का मेक्सिको में। तो बी कह रहा है कि वो सेल्स के लिए भेज ही नहीं रहे थे वहां पे, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। बी हो सकता है। सी देखते हैं। मार्केटिंग गुड्स टू अ प्रीवियसली अनअवेलेबल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इज मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन एडवर्टाइजिंग टारगेट्स दोस कंज्यूमर्स, बट डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग टेक्स लॉन्गर देन अ ईयर। You can go back to the explanation of A. If that's the reason, then why did they keep on shipping the goods throughout the year?
शुरुआत में ही पता चल जा रहा है ना कि सेल नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत है। D. The amount of Mexican goods shipped to the United States remained the same. Okay, ये तो कह रहा है कि it's not talking about US to Mexico. Passage is talking about US to Mexico, right? But D option is talking about Mexico to US. The amount of goods shipped from Mexico to US remained the same even after tariff reduction. So, I mean, that doesn't relate to the argument, right? The argument is about goods shipped from US to Mexico, not from Mexico to US. So D is completely out of scope. And E, there was no significant change in employment rate in either of the countries. Again, it's not telling us why did the sales not double. So the only option is B beta, which we explained as well. And some of you, 3 of you got the answer also. कुछ doubt हो तो आप बता सकते हैं. Meanwhile, I'll move on. But just because I've moved on doesn't mean that you can't ask me a doubt from the previous question. You can just write down your doubt. Meanwhile, we'll look at this question. Number 4. An unusual strain of bird flu has once again hit China. Because of Corona, अब ये चीज़ें हो गया कि बहुत टाइप के क्वेश्चंस मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू, ये सब क्या है, ये आप सब every student who would ever watch this video would understand this, right? So it has once again hit China, causing several cities to suspend their live poultry trade. Okay. Authorities have killed several thousand chickens, ducks, pigeons over a wide zone. Since H7N9 is rarely or never transmitted from person to person, the 16 cases of human H7N9 reported so far appear to be what? Rarely or never. You know what never is? Rarely is hardly ever, very few times. Yes, Rajat, Sanchit, Aman, correct. यहाँ पे लिखा है कि इट्स रेयरली और नेवर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो जो 16 केसेस दिखे हैं ऑफ ह्यूमन H7N9 reported so far appear to be transmitted from, of course, person to person transmission नहीं होता है. यानी कि कैसे ट्रांसमिट हुआ है? Infected birds के थ्रू, ducks, pigeons and chickens के थ्रू direct human contact, है ना? So the 16 cases reported so far appear to be linked to direct contact with infected birds, right? Correct. उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस बड़े easily eliminate हो रहे हैं. I mean, just because we are in a worldwide pandemic doesn't mean E has to be the answer, no? Doesn't really. अभी 17 केसेस से तो नहीं हो सकता है ना कि predictors of a possible worldwide pandemic. We don't know. Just 16 cases केवल लिखा है. Evidence of mutated virus? How do we know that? Then maybe it has to be much more number of cases. So C makes sense क्योंकि person to person नहीं होता है transmit. C is the best option. Moving on. Question number 5. Which of the following completes the passage? All of them are like about completing the passage. तो चलिए देखते हैं. Local visitors to nature reserves in South Africa often complain that foreign tourists
on guided tours, despite their inexperience and lack of knowledge, manage to see rare animals more often than they do. ठीक है, जो लोकल विजिटर्स होते हैं साउथ अफ्रीका में टू नेचर रिजर्व्स में जाते हैं, उनका कंप्लेन ये है कि फॉरेन टूरिस्ट को रेयर एनिमल्स ज्यादा दिखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फॉरेन टूरिस्ट को उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, फिर भी उनको हमारे लोकल विजिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेयर एनिमल्स दिख जाते हैं. कहाँ पे? नेचर रिजर्व्स में. ऑलराइट. फॉरेन टूरिस्ट ऑन गाइडेड टूर्स. Unlike in a zoo, the animals wander around to their heart's content in a huge natural area, and there's never any guarantee that a visitor to such a reserve will see a specific type of animal. Halaki, although it is believed that the success of a foreign tourist is a result of beginner's luck, but what could actually explain this phenomenon is a fact. बड़ा ही सिंपल है, लिखा ही हुआ है पैसेज में, तो लिखा है कि फॉरेन टूरिस्ट को रैंडमली थोड़ी दिख रहा है, वो गाइडेड टूर्स में है, तो गाइड्स बता देते होंगे, गाइड्स हेल्प करते होंगे, राइट. पैसेज को बहुत लंबा खींचा है और यही पर्पस होता है इन पैसेजेस का, बस कंफ्यूज करने की कोशिश. बट पहले ही लाइन से ऑलमोस्ट पता चल जा रहा है कि होना क्या चाहिए, कि अगर लोकल विजिटर्स कहते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट ऑन गाइडेड टूर्स आर एबल टू सी दीज एनिमल्स इन नेचुरल रिजर्व्स मोर देन वी डू, तो व्हाट कुड बी द रीजन. अब उसको पूरा लंबा कहानी लिखा है कि जू की तरह नहीं होता है, एनिमल कहीं भी चलते हैं नेचुरल रिजर्व्स में, कहीं भी भटकते हैं, फिर भी फॉरेन टूरिस्ट को दिख जाते हैं. हालांकि ये माना जाता है कि इट्स बिगिनर्स लक, बट रियलिटी में लॉजिकली हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट. So the tourist guides would be helping them out, right? So the option that says it is the correct answer. Yes, Aman, Rajat, Ayush, correct. So C कह रहा है the tours offered to foreign tourists are guided by people with more experience than average local visitor. तो वो टूरिस्ट गाइड्स की वजह से उनको दिखता है. C should be the right answer. दूसरे ऑप्शंस चेक करेंगे. ए देखते हैं, द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वेरियस रिजर्व्स हैव इंक्रीज्ड. ओके, तो सबको दिखना चाहिए. ऐसा क्यों कि फॉरेन टूरिस्ट को ज्यादा दिखता है? There's no communication between foreign tourists and local visitors. So, how does that make a difference? Like, maybe there is no communication, but that doesn't justify why do foreign tourists spot or see the animals more. C, we already discussed. D, rarely seen animals are usually those that are either nocturnal or vulnerable to attacks. But then again, not justifying why foreign tourists get to see them more. And E, the foreign tourists take courses in their own countries prior to the tours and thereby gain extra knowledge for the efficient classification of animals. देखिए, सी में ई थोड़ा सा लग रहा था अरे सही हो सकता है क्या, पर नहीं हो सकता है, क्योंकि foreign tourists take courses in their own countries prior to tours and they gain extra knowledge, whereas पैसेज में ऑलरेडी लिखा है they don't have extra knowledge, they lack knowledge. तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा पैसेज के इंफॉर्मेशन को. दूसरी बात ये, they gain extra knowledge for efficient classification of animals. It's not about spotting of animals, classification. But even if I consider ठीक है, तो भी ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. पैसेज में ऑलरेडी लिखा है कि उनको लैक ऑफ नॉलेज है, तो ये कह रहा है उनको एक्स्ट्रा नॉलेज है. ये तो फिर आप बात ही पूरी उल्टी कर दे रहे हो जस्टिफाई करने के लिए. आप प्रेमिस को, पैसेज के इंफॉर्मेशन को डिनाई कर रहे हो. That can't be done. How would it be logical then, right? So you guys are right. The answer should be C. We can't. We have to answer things logically. We can't deny the content given in the passage and say कि नहीं नहीं वो lack of knowledge locals गलत बोल रहे हैं. Okay, moving on. The next one again you have to complete the paragraph. So I think now I will not go through the para. Give it a shot on your own. Then maybe if required I'll go through it out aloud.
All right. So it says, in a typical year, Innovair's airplanes are involved in 35 collisions while parked or being towed in airports. Right? Collisions कब हो रहे हैं? Not during flying, while they are parked or they are being towed. With a resulting yearly cost of 10 lakh 100,000, right? 10 lakh dollars for repairs. ठीक है. To reduce the frequency of ground collisions, Innovair will begin giving its ground crew additional training at an annual cost of $5 lakh, $500,000. Although this will cut the number of ground collisions by about half at best, यानी collision बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगे, about half at best, मतलब maximum best case scenarios half कम हो जाएंगे collisions, 35 का half for example. All right, the drop in repair costs is going to be much greater. तो ऐसा कैसे कि collisions अभी लगभग 35 हो रहे हैं और half होंगे, तो I mean 17 and a half makes no sense, but ठीक है, मान लो 17 या 18 होंगे collisions, फिर भी the repair cost would decline, right? The drop in repair cost is going to be much greater. ऐसा कैसे? ये logically explain करना है. Drop in repair cost भी तो आधा ही कट होना चाहिए, but नहीं, author is saying it's going to be much greater. Which option justifies it? A देखते हैं. Most ground collisions happen when ground crews are rushing to minimize the time delayed. मतलब it's not telling us कि how the drop in repair cost would be greater. A ground collision occurs when there are no passengers. Again, this is also not telling us how the drop in repair cost would be greater. ये कह रहा है the additional training will focus on helping ground crews avoid those kinds of collisions that cause the most costly damage. तो ठीक है, 35 collisions हो रहे हैं, उनकी training होगी और केवल maybe 17-18 collisions होंगे, but drop in repair cost would be much greater क्योंकि the reduction in collision would be the reduction in the most costly collisions, the collisions that cause the most costly damage. वो 17-18 कोलिजन्स कम हो जाएंगे, तो रिपेयर कॉस्ट इसलिए बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि कोलिजन्स हर प्रकार के होते होंगे. सम जिसमें डैमेज की वजह से कॉस्ट वुड बी वेरी हाई, सम जिसमें डैमेज की वजह से कॉस्ट वुड बी मॉडरेट, सम जिसमें डैमेज की वजह से कॉस्ट वुड बी लो. द ट्रेनिंग इज सच दैट इट्स गोइंग टू basically help these crew avoid the collision that cause the most costly damage. So C makes sense. D देखते हैं. The 5 lakh cost figure for the additional training includes wages, but ये नहीं बता रहा है कि वो cost, repair cost का drop कम कैसे होगा. Most ground collision have been caused by least experienced. Again, this is also not justifying what we are supposed to justify. So yes, C is the correct answer. Some of you did get C. That's wonderful. Very good. Okay, चलिए next देखते हैं. Again, same thing, logically complete the argument. Political theorist. क्या बोल रहा है political theorist? Even with the best spies, area experts and satellite surveillance, foreign policy assessments can still lack more important information. ठीक है? Best spies use हों, area experts use हों, बढ़िया surveillance हो, satellite surveillance, फिर भी foreign policy assessments, evaluation can still lack important information. In such circumstances, intuitive judgment, which is like gut feeling kind of judgment, is vital. Intuitive judgment is feeling के through judgment पे आना, right? Feelings के through decision लेना rather than information के through.
So in such circumstances, intuitive judgment is vital. It's extremely important. A national leader with such judgment can make good decisions about foreign policy, even when current information is incomplete, because question is कि a national leader can make good judgment, uh, intuitive judgment, with such intuitive judgment, they can make good decisions about foreign policy even when current information is incomplete. तो ये कैसे होता है या क्यों होता है? तो ऐसा नहीं है कि मैजिक से आता है. It happens when those people have been into the same field when they already have a lot of past experience. तो अभी भले ही इंफॉर्मेशन लैकिंग है, बट पास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने इतना करके रखा है कि दैट दे हैव डेवलप्ड दिस इंट्यूटिव जजमेंट, विच इज एन ई कि इंट्यूटिव जजमेंट कैन प्रोड्यूस गुड डिसीजंस बेस्ड ऑन, तो एकदम रैंडम नहीं है, बेस्ड ऑन व्हाट पास्ट एक्सपीरियंसेस, इवन व्हेन राइट नाउ देयर आर इंपॉर्टेंट गैप्स इन करंट इन्फॉर्मेशन. तो ई मेक्स सेंस. डी जो है डेल्टा, गुड फॉरेन पॉलिसी कैन लीड टू इम्प्रूव मेथड्स ऑफ, ये तो ठीक है, बट ये तो आगे की बात है. क्वेश्चन ये है कि नेशनल लीडर विद सच जजमेंट कैन मेक गुड डिसीजंस इवन विद लेस इंफॉर्मेशन. कैसे? हाउ आर दे एबल टू डू इट? डी आगे की बात कर रहा है कि अच्छा डिसीजन बने लेंगे तो फिर क्या होगा. दैट्स नॉट द क्वेश्चन. यू हैव टू जस्टिफाई द सिंस मतलब क्योंकि. तो कैसे, हाउ आर दे एबल टू मेक द गुड डिसीजंस? द एक्सप्लेनेशन इज ओनली गिवन इन ए कि इट्स even though there's less information but they have a lot of past experience. सी कह रहा है both intuitive and good information are required. वो तो हम लोग भी समझ गए कि ये तो required है ही, पर हमको बताना है कि लीडर्स, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनका इंट्यूटिव जजमेंट अच्छा होता है इवन विद गैप्स इन इंफॉर्मेशन. कैसे? बी देखते हैं, दोज लीडर्स whose foreign policy decisions have been ranked highly have been found to have good intuitive judgment. Not justifying कि कैसे ये हो रहा है. The central reason for failure in decision making is absence of information. Now this is going on a different tangent because the passage is saying ki intuitive judgment works. How does it work has to be justified, which is done in option E for elephant. So yes, Asim, Sanchit, Aman, Rajat, all of you got E, and that's perfect. That's the correct answer. Wonderful. All right. Chaliye, let's give this one a shot. Good afternoon, Tanmay. A very happy new year to you too. So how was your exam? Eighth one, the author is arguing that, okay, let's see the para. In many corporations, employees are being replaced by automated equipment in order to save money. Okay.
However, many workers who lose their jobs to automation will need government assistance to survive, and the same corporations that are laying people off, you know, in a way they're like firing people, will eventually pay for that assistance through increased taxes and unemployment insurance payments. तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है? पॉइंट ये था कि बहुत सारे कॉर्पोरेशंस क्या कर रहे हैं, दे आर रिप्लेसिंग एम्प्लॉयज विद इक्विपमेंट्स, क्यों? मनी सेव करने के लिए. अब आता है अगेन हालांकि a contradiction कि many workers जो jobs lose कर रहे हैं because of this laying off and this automation, उनको government assistance लगेगा, जो कि बहुत सारे welfare states और developed countries में होता है, government assist करती है, right? तो same corporations that are laying off the people will have to finally eventually in some way pay for the assistance through what? Through increase in taxes and unemployment insurance payments. तो हमको बताना है, the author is arguing that so Rajat has given one answer. Oh, that's nice. Full attempt in VARC and decision making. That's great. And in the attempts that you have made, उसमें confidence तो full attempt किया तो I'm sure there would be confidence as well in the answers that you have marked. Okay, so for this one, Rajat, Aman, Sanchit, all of you have got beta, B. Asim also got B. Right? है ना? हमको in a way यहाँ पे हमको बस argument को we had to write the argument we had to write the gist of the argument in a way, in a nutshell. Author बोल क्या रहा है? दो बार मैंने रिपीट कर दिया है कि एम्प्लॉयज ऑटोमेशन की वजह से एम्प्लॉयज ले ऑफ हो रहे हैं, कंपनी सोच रही है कि उनका खर्चा कम होगा, बट ऑथर आगे बोल रहा है कि फाइनली कंपनीज को खर्चा कम होगा, अनएम्प्लॉयड पीपल कंट्री में ज्यादा होंगे, गवर्नमेंट असिस्टेंस उनको मिलेगा. गवर्नमेंट का पैसा आता कहाँ है? ऑफकोर्स टैक्सेस के थ्रू आता है, तो इन्हीं कॉर्पोरेशन को फिर टैक्सेस हायर पे करने पड़ेंगे. एंड ऑफकोर्स आप ले ऑफ कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पेमेंट्स भी करना होगा. तो इवेंचुअली दूसरे खर्चे, कंपनी ने ले ऑफ किया तो सैलरी देने का खर्चा उनका कम हुआ, पर दूसरे खर्चे बढ़ गए, विच इज मेंशन्ड इन बी, बीटा. सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर. Perfect. It is B. All right, now chaliye, last question of the day. Let's give it a shot. Yeah, DM might have been a bit tricky in some places. All right, chaliye, let's try this one out. Which of the following again logically completes the statement above? Many airlines have been pushing the federal government for assurances of greater security in case of terrorist attacks on board flights. Okay. One of these airlines expects the improved security to help increase revenue by $20 million a year, mostly from people who. बहुत ही simple है.
So all DM passages were 3 questions each. Were the paragraphs longer or like medium? The characters were unethical. Okay, so for this one, three of बड़ा simple है ना question number 9 बहुत ही direct है बहुत एयरलाइंस पुश करें गवर्नमेंट को फॉर अश्योरेंस ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी इन केस ऑफ टेररिस्ट अटैक्स राइट टेररिस्ट अटैक्स कहाँ ऑन द फ्लाइट्स वन ऑफ दीज एयरलाइंस एक्सपेक्ट्स कि सिक्योरिटी अगर इम्प्रूव होता है तो उनका रेवेन्यू $20 million से बढ़ सकता है तो कौन से लोग ट्रैवल करेंगे उन प्लेन से वही लोग ना अब आप टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट अश्योरेंस मांग रहे हो इम्प्रूव सिक्योरिटी मांग रहे हो वो सिक्योरिटी मिलती है और आपको लगता है कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा यानी कि नाउ व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल मोर द वंस हु आर fearful of terrorist attacks who wouldn't have traveled without the security which is mentioned in A. B कह रहे हैं who travel by train in the summer I mean why would they suddenly start traveling by plane right just because there's more security are they afraid of were they afraid of traveling by plane earlier ये सब नहीं दिया है तो B नहीं होगा people who spend more money on traveling मतलब C, D, nothing actually relates to the terrorist attack part and the safety part. None of them, right? So A is your answer. It's the perfect answer. Okay. हाँ ये एक्स्ट्रा इन्फो वाला जो होता है जो आप डीएम में देखते हो रीजनिंग में भी देखते हो अभी जैसे हम एक क्वेश्चन देख रहे थे ना ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 local visitors to nature reserves in South Africa often complain that foreign tourists on guided tours, despite their inexperience and lack of knowledge, manage to see rare animals more often than they do. ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें आगे पूरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हम बस पहला सेंटेंस ही पढ़ के आंसर फिगर आउट कर सकते हैं कि सी होगा तो दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर ट्रैप्स इन मेनी क्वेश्चंस की खूब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल के रखते हैं ताकि पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो जाए पर अब जो एग्जाम्स आपके बचे हैं अब जो बचे हैं नाउ दैट यू गाइस आर डन विद कैट जैट ये सब हो गया आईएफटी तो अब जो बचा है उसमें उतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला टेंशन नहीं होगा क्योंकि अब जो एग्जाम्स बचे हैं वो काफी इजी हैं CMAT CT these are very easy exams if you have already prepared for CAT okay चलिए then let's call it a day for now and I'll see you guys tomorrow keep practicing oh yeah let me once again tell you about the subscription plans because of the offer that's going on right now today and tomorrow so like I already mentioned कि हमारे पास subscription plans है plus an iconic plus में मिलते हैं live classes weekly tests structured courses unlimited access and study material in iconic you get everything that comes with plus along with that there's personal guidance test analysis experts guidance study planner बट द डिफरेंस इज कि अभी आज और कल आप अगर हर बार आप कोड यूज करते हो तो 10% ऑफ मिलता है आज और कल स्पेशल ऑफर इज कि 22% ऑफ मिलेगा and in whichever subscription subscription plan you go for you'll get 22% off on using the code sharmaji SHARMAJI तो देख लीजिए प्राइस पॉइंट्स करंट प्राइस पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं 6 मंथ्स का 16,400 है बट अगेन 22% ऑफ हो जाएगा उस पर 18 मंथ्स 24 मंथ्स किसी के लिए भी आप जाएं या फिर आइकॉनिक के लिए जाएं ये करंट प्राइसेस लिखे हैं यूज द कोड एंड गेट 22% ऑफ ऑन द सेम ऑलराइट गाइस तो आई विल साइन आउट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू टुमारो टेक केयर बाय बाय